9626 paper 4 specimen paper for 2025. This is a question number 4 that says that you have a file named quizdev.html and you need to open it into your browser and into a text editor. The JavaScript for the web page is not completed. For this purpose of this task, your final code does not needs to check if the answers entered are correct or not. So I have the working files right here. I'm opening this in with the Dreamweaver. This is the file that we have just right here. The question says that the web page, the JavaScript for the web page is not completed. For this purpose, your final code, okay? Click on the buttons to find out what already works. So for now, if I'm checking it for now, I can see that only the next this button is working. Start the quiz is also working, and click to restart is not working. The A part says that add JavaScript code to make sure that the cell for the answer is blank as soon as the start quiz button is clicked. That means that just when I click on the this button, that is start the quiz, this has to remain blank here. So for understanding this, I'm going to go into my Dreamweaver. Then at first, this is the piece of code I have right here, but I do not know currently that which ID or class it links to. So I'm going to click right here on live, and I'm going to tap here. Just as I tap here, you can see that it is giving me a value of input placeholder. That means that the value that is in right here, it is has an ID that is answer placeholder value. So I'm going to go back into the code. This is just right the place where this button is added. Type your answer here. So I'm going to copy this. Then there is a separate section here for functions to alter the contents of cell in the table. I will be writing it right here so that I can edit the table. As you can see right here that now when the quiz is started, you have this available area where you can type your answer. So this part is completed. Add JavaScript code to make sure that the cell for the answer is blank as soon as the start button is clicked. As soon as the start button is clicked, the answer box is available for you to write it down. The B part of the question says that the web page should display only 5 questions. That means that we need to set a condition right here. Add a JavaScript code to display a new page after
the 5 questions. That means that just after the 5 questions, we need to add a new page that should display this text right here. The question number is given just right here, so we can add a condition just below that. If question number is greater than 5, then brackets open. That means print document dot write. Quiz 1 complete, close your browser. Just as it completes, you can see that this is line here, close 1 complete, close your browser, but it is not certainly into the font that this is like. It is first of all quiz 1 complete in bold form, centrally aligned, then there is a line break, then there is a second line. So to complete this, I'm going to go into this code and I'm going to add some text tags here. So first I'm going to add mm, H1, and it should be center aligned and bold. Quiz 1 is complete. Then there should be a line break and close your browser. If you are opening the tags, you also need to close them. As you can see now, both of them are same. Formatting is same as well. Now let's move on to the next part. The C part says that the click to restart button must restart the quiz. Add a JavaScript to refresh the page whenever the button is clicked on. So first of all, I'm going into go into my design view, and just after going into the in the live view, I'm going to check that what is the value for my start button. So if I'm going to click here,
it is going to show me that the value is this refresh. So that means that this is the place where I can work on the code. So by going into the code and now searching for this refresh. So I can see just right here that this is the code for this is the button for the refresh one. So I can amend it. क्लिक टू रिस्टार्ट द क्विज के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो मेरी प्लेस होल्डर की वैल्यू है इसको मैंने यहाँ एम्प्टी कर दिया था, ताकि जब मैं क्विज को स्टार्ट करूँगा वहाँ पे बॉक्स ना आए। और यहाँ पे जस्ट बिफोर ये स्क्रिप्ट एंड हो और इस बटन के बाद यहाँ पे मैंने एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है। दैट मीन्स के रिफ्रेश हो, टाइप योर आंसर हियर एंड लोकेशन रिलोड। दैट मीन्स कि अगर मैं फंक्शन रिफ्रेश के ऊपर टैप करूंगा तो ये रिफ्रेश हो। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सी पार्ट के अंदर द क्लिक टू रिस्टार्ट द क्विज बटन मस्ट रिस्टार्ट द क्विज, एड अ जावास्क्रिप्ट कोड टू रिफ्रेश द पेज व्हेनेवर द बटन इज क्लिक। इसके बाद डी पार्ट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि ऐड कोड टू डिस्प्ले ओनली द स्टार्ट क्विज बटन एट द बिगिनिंग एंड शो द नेक्स्ट क्विज बटन एंड क्लिक टू रिस्टार्ट द क्विज बटन व्हेन इट इज क्लिक। सो दैट मीन्स के स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास स्टार्ट द क्विज आए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द क्विज आए। तो इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये फंक्शन रिफ्रेश के साथ इसी पैटर्न को जो ऑलरेडी कोड के अंदर लिखा हुआ है मैंने इसको फॉलो करते हुए फंक्शन शो बटन लगाया है। फंक्शन जो शो बटन के अंदर मैंने तीन चीज़ें ऐड की हैं, क्विज बटन, नेक्स्ट व्यू बटन और रिफ्रेश बटन। ये मुझे पता कैसे चला, मैं जब अपने लाइफ के ऊपर गया, लाइफ के ऊपर जाके दिस इज माई क्विज बटन। और आपके पास तो पहले से ही नहीं हुआ होगा, बट यू कुड सी के जो मेरे पास इसके अंदर अलग से दो बटन्स हैं। वो मेरे पास यहाँ पे एक होगा आपके पास दिस नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट क्यू बटन और एक रिफ्रेश बटन। तो जो ऊपर से कोड है सिर्फ मैंने उसी को अपने पास कॉपी किया है, फंक्शन शो बटन तो एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है लाइक दिस के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्विज एलिमेंट स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन, स्टाइल डिस्प्ले नॉन और स्टाइल डिस्प्ले। अब इसको अगर मैं सेव करके अपने पास अपने इसको मैं रन करता हूँ तो यू कैन सी राइट हेयर कि अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मेरे पास सिर्फ स्टार्ट का बटन है, तो ये मेरे पास बटन है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट चल रहा है, और जस्ट इन केस अगर अब मैंने रीस्टार्ट किया तो ये मेरा क्विज रीस्टार्ट हो गया। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जो इसका सी और डी पार्ट है, सी और डी पार्ट आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, राइट हेयर।
वन मोर थिंग वी नीड टू मेंशन हियर राइट हियर कि इस स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में लाइन नंबर 46 के ऊपर नीचे जो मैंने फंक्शन अपने पास डिक्लेयर करा है उस फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल कराना है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर बटन्स जो हैं वो इस के अकॉर्डिंगली शो नहीं हो रहे, मतलब जैसे कि पहले स्टार्ट क्विज है उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लिक टू रिस्टार्ट क्विज है, देन यू नीड टू गो राइट हियर और लाइन नंबर 68 और जस्ट बिफोर दिस सेल ऑफ सेकंड रो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी क्विज बटन की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे चेंज करनी है, जस्ट राइट लाइक हियर। तो फिर जो है आपके पास ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा एंड लास्ट में ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू सेव दिस। सो इफ आई सम इट अप, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपसे कहा गया है कि इसके ए पार्ट के अंदर मेक श्योर द आंसर इज ब्लैंक सून एट द स्टार्ट द क्विज बटन इज सिलेक्टेड। तो स्टार्ट द क्विज बटन के अंदर मैंने चेक किया था कि जो मेरी वैल्यू है वो कौन सी है और मैंने अपने फंक्शन के अंदर पहले जहाँ पे जाके ये लगा दिया था, दैट मीन्स कि अब वहाँ पे वो नहीं आएगा, ये मेरा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट के अंदर आई नीड टू ऐड अ जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले अ न्यू पेज आफ्टर 5 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, इट मस्ट डिस्प्ले क्विज वन कम्प्लीटली। तो यहाँ पे जो मैंने अपने पास लाइंस लगाए हैं, सो यू कैन सी इट राइट हियर। क्वेश्चन नंबर के नीचे यहाँ पे मैंने लिमिट भी लगा दी, क्वेश्चन नंबर इज ग्रेटर देन 5 और डॉक्यूमेंट और राइट मतलब प्रिंट करके इसको मैंने फॉन्ट्स दे दिए, बोल्ड कर दिया, ब्रेक कर दी लाइन और H1 टेक्स्ट दे दिया। तो यहाँ पे मेरा बी पार्ट हो गया। इसके बाद सी पार्ट के अंदर था कि द क्लिक टू रिस्टार्ट द क्विज बटन मस्ट रिस्टार्ट द क्विज एट अ जावास्क्रिप्ट टू रिफ्रेश द पेज व्हेनेवर इट इज क्लियर। तो पेज को रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपके पास यहाँ पे एक रिफ्रेश का एक फंक्शन लिखा और फंक्शन लिखने के बाद उसको कॉल भी कराया है। फंक्शन को हमने कॉल कहाँ कराया है, जस्ट राइट हियर। ये जो इनपुट टाइप बटन है ये मैंने अपने जब मैं फ्रेश रिफ्रेश करवा रहा था वहाँ पे मैंने किया कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश करने के बाद जो लास्ट पार्ट है मेरे पास वो ये कि आई नीड टू ऐड अ कोड टू डिस्प्ले ओनली द स्टार्ट क्विज बटन एट द बिगिनिंग एंड शो द नेक्स्ट क्वेश्चन बटन एंड क्लिक द रिस्टार्ट बटन व्हेन इट इज क्लिक। तो इसके लिए बेटा दोबारा से हम नीचे गए और नीचे जाके मैंने ये फंक्शन लिखा और फंक्शन लिखने के बाद इसको मैंने कॉल करा दिया टॉप पे जाके, क्योंकि फंक्शन लिखने के बाद हमें इसको कॉल भी कराना है, ये रहा शो बटन। और कॉल कराने के बाद जो मैंने सबसे आखिरी काम किया उसकी नंबरिंग और लेबलिंग के लिए वो लाइन नंबर 68 69 और 70 में है। दैट मीन्स के ये ऑफर और टू और फंक्शन रिफ्रेश से ऊपर यू नीड टू टाइप लाइंस लाइक दिस ताकि वो हाइड कर दे स्टार्ट को इस बटन को डिस्प्ले करा दे नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन को। सो आई एम सेविंग इट और अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो यू कैन सी ये स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है और ये रिस्टार्ट हो गया। तो इसी सीक्वेंस के अंदर ये आपका क्वेश्चन आ गया है।